It is now time for the second panel discussion of the day on Industry 4.0, ready MSMEs with technologies for smart growth. While the potential benefits of technology and automation are substantial, MSMEs encounter unique challenges in their journey towards adaptation, such as financial constraints, lack of technical expertise and skilled labor, awareness issues, and more. To overcome challenges to technology adoption, MSMEs may need tailored strategies addressing specific needs and collaboration with technology providers and industry experts to access the necessary resources for automation implementation. Against this backdrop, the second panel will discuss further how MSMEs can prepare themselves for smarter and faster growth with the adoption of the right technologies. In alphabetical order, may I invite Mr. Abbas Mehdi, Additional Director, Software Technology Parks of India, Ministry of Electronics and Information Technology. Mr. Mehdi has done M.Tech with specialization in software engineering and carries vast experience in the field of networking and has provided consultancy to various projects and implementing IT infrastructure in the country. He is also a member of the multiple academic councils and is on advisory board of the different institutions and universities. Joining him is Mr. R.K. Trivedi, Professor and Head, Center of Excellence in Product Design and Smart Manufacturing, Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal. A PhD with Production and Maintenance Engineering as an area of specialization. Mr. Trivedi has over 44 years of experience and has 40 journals published internationally and nationally. He has also authored 2 books and is also an advisor to the Union Public Service Commission since 2016. Next, we have Mr. Yogesh Khakre, a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India and former chairman of the Bhopal chapter of ICSI. He has more than 15 years of experience in various corporate houses and is currently serving as Company Secretary of Bhopal Smart City Development Corporation Limited and CEO of the biggest startup incubator in Central India, PDES. He is a mentor to startups at other recognized incubation sectors, also like AIC R&T, STPI Incubation Program, and Padwani Foundation, etc. And to moderate this panel, we have Mr. Sandeep Soni, Senior Assistant Editor, FA Aspire, Financial Express Digital. Please join me in welcoming our panel up on the stage. So it's all the panels, and thanks to the audience, I'm taking a precious time to join us. This is technology is something I think which we all are very interested about. People go more and more. I still progress in different types of operations and business. So, a little ago, I think you also have problem with that. I think how many people are comfortable with English and comfortable with Hindi? How many of English speak? So we'll figure that. So we begin with this experiment. So we'll to technology. The past, which development was still the show we are updating. MSMEs के पास एक बार होता था. That in the past few years, like email ID, maybe एक website like social media business होता है. Do you think आज के MSMEs still आगे बढ़ पाएंगे? Do they understand deep technology, artificial intelligence, machine learning क्या होनी है? को कैसे माइप करना है, कैसे अनलॉक करना है? इसका मतलब ABCD क्या है? Do you think they understand? When English not, how they mean? I think Hindi will be much comfortable for everybody to really connect on each other with very fastly with the standard things and the maybe. So पहले जो होता था पहले जो हमारी इंडस्ट्री होती थी वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करती थी और ज़्यादा उनके पास में बड़े और हैवी सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे मशीन्स भी हमारी कन्वेंशनल मशीन्स थी पहले और हम कन्वेंशनल मशीन से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़े इंडस्ट्री 4 की तरफ बढ़े कितने लोग जानते हैं ये सोफिया का नाम कितने लोगों ने सुना है सोफिया 1 2 3 4 5 7 Sophia. So we are talking about the industry 4, whereas now we are stepping up, or the global world is stepping up towards the industry 5. Sophia is the robot which is going to understand your emotion. And the machines, what we are using now, they will be like 20 intelligent machines.
ये मशीन सब वैसी नहीं रह गई कि हमने यहाँ से अगर खराब मशीन है, डेप मशीन है और हमने उसमें फीड कर दिया, उसके बाद में लेटेस्ट जनरेशन में फिर कुछ और आई जैसे CNC मशीन्स वगैरह आई। और फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, तो ये जितनी ये मशीन्स थी वो ऑपरेटर यूज कर रहा था, बट नाउ operator was also having a mood swing, and his mood swing was definitely affecting the quality of the product what we are going to have. So quality को maintain करने के लिए, so now the technology is moving towards the or is stepping up towards the industry 5 now. So remember, like Sophia, there are 10 other names are there, the robots which can understand your emotion, which can understand your anger, and that can be implemented with the machines what we are using. And remember, those machines will be, or those machines are the intelligent machines. So the interaction between the operator and machine was a different level that time. But now, in a present industrial scenario, the interaction between the operator and machine operator, when I say operator, I am talking about the intelligent robots and emotional robots as well. तो वो सब हम जुड़ रहे हैं हमसे. Other problem, can I say in the more? Now the problem is today MSMEs. हम चाहते हैं कि हम उसको इंडस्ट्री 4 की तरफ जाएंगे. तो मैंने एक सिनेरियो बताया है इंडस्ट्री 5 की तरफ भी अब हम लोग बढ़ रहे हैं. हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्री 4 के बारे में, हमें इंडस्ट्री 4 के बारे में कई चीज़ें हासिल किए हैं गूगल से और यहाँ वहाँ से, नॉलेज से, कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से. लेकिन चैलेंजेस क्या है और हम कितना पैसा लगाएं उस पर. एक ऐसे MSME अगर है वो चाहती है कि मैं इंडस्ट्री 4 में जाऊँ, लेकिन वो पैसा कितना लगा है एंड वेयर इज ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हमको इस पर भी बात करनी चाहिए. और हमको एक स्टेप्स भी, एक सजेस्टेड स्टेप्स भी होने चाहिए हमारे पास में चाहिए जो हमको बताए कि हम कैसे बढ़े. एक छोटा सा एक मैं 2-3 स्टेप्स बताता हूँ, बड़े मतलब कंसाइज करके बताता हूँ. जैसे अगर हमको there are so many tools are available nowadays which can analyze the critical equipments of your organization. Critical. It can analyze and it can give you the feedback regarding the ROI, how much ROI you will be getting from which equipment or which process or which operation. तो हमको सबसे पहले जो करना होगा, हमको एक एनालिसिस करना पड़ेगा और उस एनालिसिस में हमें गैप देखना होगा कि where to start with. And mainly, you go with the strategy that lower fruits first. Lower hanging fruits first. हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे नीचे लटक रहे होते फ्रूट्स को हम तोड़ते हैं. सेम पे हमको यहाँ पर भी जाना पड़ेगा. We have to point out some small steps or the baby steps we have to point out where we can implement the industry 4. I exactly make it go for the investing. Immediately we cannot go for the industry work. Immediately we cannot go. So I would suggest that we will go for one machine. I said that particular machine is smarter. There we can put the condition monitoring so that the machine itself, they can check their own health. There are the condition monitoring techniques out there. There are small module can be put there. It's just like a pilot project. We can go and we can put one machine on for the condition monitoring. Say it will tell or it will analyze its own health and it will predict when the maintenance is required and how longer this machine will be working. This is not it has got no much investment. Simple redundant investment can be done. उसके बाद में जब अगर हमको ये पायलट प्रोजेक्ट अगर हमारा सक्सेसफुल होता है, then we can go for one more step ahead and we can go for the integration. अगर हमारी ये मशीन अपनी है खुद पहचान पा रही है कि हम स्मार्ट हो गई, कि हम बता देंगे कि हमको अब मुझमें ये प्रॉब्लम आने वाली है, या अब मेरे ऑयल की कंडीशन ऐसी हो रही है, अब मैं इतने दिन तक मैं सर्विस दे पाऊँगी.
तो उसके बाद में then we can connect it with the ERP system or the system which is executing the entire production system. So at least one particular segment can, it will be there. And then we get slowly but surely we can move ahead for this. But there are some challenges also we may discuss it in later. I think some others were there is that. Correct. So mainly, we talked about a couple of very important pointers. What we talked about understanding the art, right? Taking the baby steps into doing the pilot tools is understanding the art. Software technology plans is all the words. You work with SMEs also. We have an incubation service. What cloud, how cloud, and SaaS when we can in what we can hit kind of cost for our discussions. Is that the right way exactly of reduce costs when we talk about the return on investments? How we can visualize these can be yields. The basic problem with the SMBs, especially with the micro scholars, is that they can't be investment. For example, today I give an order, what our team. So team I will order a very investment that company. Or term IT and ITS technologies, term SMEs will be best development. So still the advantage है. If you think there are a number of cloud services which is available, जहाँ पर हम बड़े जैसे कोई हमें शादी हुई तुम क्या करते हैं हर चीज़ पे किराया करें मुझे यूज़ फॉर इस्तेमाल बहुत चली तो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया उस पर हमने अपने यूज़ चीज़ काफी किया हमारे घर पर 500 लोग आएंगे 1000 आएंगे 2000 आएंगे 200 आएंगे 100 आएंगे डिपेंड हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हमने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसको रेंट आउट किया उसको पे किया तो बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट हम उसको स्केल अप भी कर सकते हैं स्केल अप डाउन भी कर सकते हैं यूजर्स के हिसाब से बढ़ा सकते हैं तो ये नंबर ऑफ सर्विसेज क्लाउड बेस्ड इस समय अवेलेबल है और एसएमईज डेवलपमेंट आर इमर्जिंग और उसको यूज भी कर रहे हैं आपके बिजनेस को जो इंटीग्रेट करने में डिलीवर करने में कस्टमर बेस बनाने में गोइंग इंडस्ट्री स्कोप इन एरिया आई थिंक our SMEs are doing and taking advantage of this. Mr. Khakre was some to use standard there's a priority that's right technology. So probably the kind of mentorship for veteran they need is significantly different from the kind of hand-holding SMEs entrepreneurs of the moment. So yours is how SMEs can be onboarded in the right way and what things you think SMEs are required to such business, which probably a startups here, it's an incubation. Right. So firstly, I would like to quote what yesterday we have seen that Mr. Narayan Murthy has said that India is very low in productivity. The statement today we have read in the newspaper. And we have to, if we need to outbeat the countries like China and Japan, so we need to work around 70 hours a week. It is a statement. So my point is, on the one hand, we are saying there are 63 million MSMEs contributing 40% of GDP, 30% of GDP, 40% of manufacturing, 45% of exports. And they are contributing like a backbone to the economic growth. But still, what the startups are doing in last couple of years, and they are operating the companies like TCS, Wipro, Infosys, Happiest Mind, new companies, Zoho, and the companies like Zomato, Swiggy. What they have done differently, what the conventional businessmen have not done in these last couple of years. So, first thing we need to accept that there is a basic difference between MSME and startup. So, what is MSME? MSME stands for stability, stable business, conventional business. MSME stands for gradual growth. MSME stands for sustainability, stands for high capex, plant and machinery, production, raw material, working capital, heavy working capital, inane labor. So these are the synonyms of MSME. And startup means disruptive innovation, rapid growth. Instead of sustainability, scalability. Instead of traditional way of financing, I forgot to tell, in case of MSME, the conventional way of financing, that is bank finance. In case of startups, that is private equity, angel investors, external source of funding. They are more dependent upon technology. They are more focused upon creating an aggregator platform. They are more focused upon getting
new brains into the business, right? And they are having adopted as a type model. So this is the difference between MSME and startups, basic fundamental difference. And then we provide a handwriting solution. Then we have to think about what kind of handwriting is required for MSME. So there is a say, very popular, that the business that invest into majority into technology, they outperform their peers, right? So first thing is you find the difference. What they have done, they have embraced the innovation. They have adopted the new financial digital tools. I am saying about the startups. So startups ने ऐसा क्या किया? Startups ने और innovation culture से introduce कराया, जो कि आप MSME में बहुत ही रेयरली फाइंड करते हैं. सो इसका सॉल्यूशन जो हैंडवर्टी का आप क्वेश्चन उसमें हम बता चाहूँगे देयर इज अ AAA मॉडल. So first A stands for accessibility. We should provide accessible through the technology for MSMEs with the help of government policies. So the technology interventions अभी होंगे जब उनको accessible है, technology accessible, जिसमें कि आपको bandwidth, 5G network, broadband connections, ये सारा जो फाइबर ये नेटवर्क उनको accessible होना चाहिए. Second is affordability. So accessibility is having some cost. So technology is having some cost. So that cost should be affordable by the MSME. So ये अगर affordable होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा adopt करेगा. Third is availability. Accessible है, affordable है, but availability नहीं. So there is no lack of network or availability of the technological solutions, digital tools. So these are some issues through which we can properly handle the MSMEs. Like there is say कि लगभग 1200 large enterprises in India, and they are contributing around 40% of GDP, which is very low as compared to Asian peers. So the solution is that at least 1,000 mid-sized companies should transform them into large companies. At least 10,000 MSMEs, small companies, transform themselves into mid-sized companies, and that is by 2030, so that we can achieve the common goal, that is 10 trillion economy by 2030. And the mantra is innovative culture, which needs to be adopted by MSME, what we have seen in the startup ecosystem of India. This is very cool. It's a very cool. So you have talked transforming change. Very bad at it. It comes from manufacturing. Make in India, manufacturing in India is all fine. But can we have a successful make in India without a concept of design? Do you think unless we design in India, we can have a successful make in India? I guess I agree with you. There is interesting read of designing the ecosystem also. Although we are coming up, the MP Madhya Pradesh government and PM were founded with PM has also started some of these schemes. So we are certainly coming up a little bit. But if we talk about it, designing in a two-part, designing a system and designing the benefit shape, components and ideas and forth. So now there is a lag between the people who are the stakeholders and the designers. So designers हैं वो कहीं और से कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम हो रही है, स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको दिक्कत हो रही है. So there is a pressing need of bringing everybody on one single platform. Like Menon has taken an initiative into this thing. Like हमने क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग इंडस्ट्रीज को बुला रहे हैं, उनके साथ में डिज़ाइनर जो प्रैक्टिशनर्स जो हैं हम उनको भी साथ में बुला रहे हैं, हमारे एकेडमिशियंस भी साथ में एक साथ सारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं. एंड प्लस स्टूडेंट्स ऑल्सो भी बताते हैं अबाउट द पोटेंशियल एंड दे अबाउट द एनर्जी ऑल्सो ऊर्जा अपने में. तो हम इन सबको एक साथ बुला के देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू get the real industrial problems, real-time industrial problems. And the designers and the students and our faculty, they all are it is together and they are giving the solution, or they are trying to finalize it or finding out the solution. तो ecosystem की ज़रूरत तो है. साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि हम कितना मतलब वो आगे बढ़ पा रहे हैं, इंडस्ट्री कितना आगे आ पा रही है.
एक इसमें और छोटी सी मैं चाहूँगा जो मुझे एज पर माई बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड मेरे एक्सपीरियंस लगभग 44 से 45 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का भी और एकेडमिक का भी. तो मुझे एक चीज़ जो लगा कि देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द academicians and the industry. There is how other globally देखिए foreign countries अगर दूसरी जगहों पर देखें तो वहाँ academicians बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्री के साथ में बचे बसे हैं और उनके जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रॉब्लम्स होती है वो हम अब वो लोग academicians को सॉल्व करते हैं दे मेक द एल्गोरिथम दे टेक द मैथमेटिकल मॉडल्स एंड दे गिव देम द सॉल्यूशन परफेक्ट सॉल्यूशन. वो चीज़ की हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी है. जैसे हम लोग अगर कुछ करना चाहते तो हमें इंडस्ट्री ढूंढने में मुश्किल होती है कि हम आधे इंडस्ट्रीज को कैसे हम प्रोटेक्ट करें. देयर इज अ शॉर्ट ऑफ लैकनेस इज देयर. क्या हम चाहते हैं इंडस्ट्री में चाहती है कि हमको परमिशंस मिलें हमें एक्सपर्ट्स की सलाह मिले लेकिन उनको वो हम तक नहीं पहुँच पाते हम बहुत तक कुछ रहता. तो सर्टेनली देयर इज ए नीड ऑफ इकोसिस्टम if we want to grow together and if we want to make make in India or if we want to make the dream successful, make in India, certainly they need to do. And we are trying from the academic side, we are trying and then trying to train the people. Look, the government is also doing a lot like globalistic podcast for their, they are working for the training. They have done the collaboration with the premium institutes or the institutes of the national importance. So they are also doing. So things are working, but it has to be accelerated into the positive direction, and we have to steer that with the positive direction. So when they make in India, where the focus is this idea in the story, really don't. How about they do it in India? Do you think police in this particular you know, and you engage with them? Careful of they understand what innovations or just being in the over or even and also you know copies of we're getting things in answer in the back. Do they think that's innovation? What according to the SMEs understand whether the information and though I think doing real innovation. And it's so how the instinct is also there. Well, innovation I guess our concept and the real one buzzing word with air. What is innovation? We are doing the same thing but in only. Which is in the civil product very needy to that deal. It's the man some of the comes on there. The civil cost goes at the end, got before the innovations and moves and more. That was what the innovation is about. Innovation here I want with realities but I invention getting it other than innovation is that invent more. Realities oriented. To see is को अगर हम कम समय में कम लागत में कम जो है अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके हम दे पाएंगे. That is not the innovation. And I would like to say that Lord of India would improve the Lord to enhance and encourage automation in the Lord. SPDI has opened 22 number of center of excellences. And we have, it is center specified invention. Like we have in SQE, we have SQE in artificial intelligence, data analytics, data 2.0, we have two series, one is in Incubation and one is in Isaac. And we have in FinTech, we have in MedTech, we have in AgriTech, VR, and so many others. Talking उसमें innovation, but the one point is that हमारा जो CV जो आपकी बात कर रहे हैं जो विश्व में है और हमारा Isaac में हम MSMEs से जो है, in fact उसमें info देते हैं कि आपने क्या समस्या आ रही. अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई innovative solution बनाया जाए, तो आप हमें की समस्या आगे दीजिए. उस समस्या के ऊपर PPP going to organize and conduct an open challenge program उसी पे और हम उन स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड कराएंगे जो कि इन सब समस्या के ऊपर का उससे दो फायदा हुआ है. एक तो फायदा ये हुआ है कि उन स्टार्टअप्स को ऑलरेडी मार्केट मिल जाएंगे जब वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा और उनके लिए ऑर्डर्स रेडी है जो SMEs द्वारा दिए जाए. दूसरा फायदा ये होगा आप SMEs पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनको एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मिल जाए. तो कहीं विन-विन सिनेरियो है. अभी क्या हो रहा है कि SMEs की बड़ी समस्या ये होती है फिर कोई चीज़ लाना भी चाहते हैं तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी है. इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली. अब ऑटोमेशन की बात करते हैं लेकिन मैं कॉस्टली गिरा था उस कॉस्टली को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ये स्टार्टअप का रोल बहुत है. These ignited minds जिसको मैं स्टार्टअप बोलते हैं ये जो मेरे अंदर हम अपनी समस्या देंगे और उन समस्या के ऊपर चैलेंज प्रोग्राम के थ्रू ऑनबोर्ड करें तो आई एम श्योर कि बहुत जल्दी
but it comes from Mehdi. What an innovative solution होता है, and that is the best way it. और जो गैप आप लोग के इंडस्ट्री में है वो भी फिल हो जाएगा और उनको भी एक नया प्रोडक्ट और एक नया मार्केट और नया ऑर्डर पे मिलने की. I think it is beneficial for both of the industry. Nonsense. Centers of excellence, you touch on something which is today's very academic. Yogesh, very fast incubators, startup incubators, I think there are, good numbers in the country. Because incubators for MSME industry runs technology centers, pool rooms, which do you think there are enough numbers? So what kind of, there is a change in model or probably new techniques need to be introduced when it comes to incubation or small businesses, MSMEs, which can be radically different from what a startup did in terms of. So, as you said that if there are enough number of incubators, I would like to again ask the question, then the startups, MSMEs are different. See, so MSMEs, what they are doing, their need is different. They are actually busy in their team. So they become epicenter of their whole system, what they have created, right? So वो proudly businessmen कहते हैं अपने आप को, but मेरी नज़र में वो self-employed. If you are doing business 12 hours, 13 hours, 14 hours a day, and you're sitting in your own office, then it is self-employment. It's not business, right? So because of that routine, they are confined and they are averse of any training and capacity building program. For that, we have enough numbers of incubators, and we are running a good number of programs for them. I would like to go to one such program, which is run by CII, that is Digi Saksham Abhiyan or program, in which they are targeting, they are running this program in phase wise. First phase, they are targeting 3 lakh of youth to which they are providing awareness for financial digital tools, and then they provide access to these tools and techniques so that they can use in their business and improvise their productivity. And second phase, they are providing trainings both in offline and online mode. So out of these 3 lakh target audience, they are finding 75,000 youth so that they can equip them with the skills required, strategies required, how to face the situation which is not happened previously, like we have seen the COVID pandemic. So this kind of situation which MSMEs have not faced, those who have faced, they can become a mentor to them. And in third phase, they are targeting around 50,000 youth out of that 3 lakh, then 75,000, then 50,000, those who can adopt these kind of tools and techniques. So this program is successfully running since last 2-3 years, and they have in 8 states they have 25 districts, and along with 40 mentors. So they have created awareness program about 13,000 targeted youths. Around 12,000 of them have access to the tools, and 5,000 have adopted these tools. So it's a very successful program, and the mantra of the MSME mentorship is triple T model: tools, techniques, and technology. Tools, technique, and technology. This kind of mentorship and handholding, because if you want to have a paradigm shift in your business, then you have to take out your time and say, because आप शुरुआत तो करते हो MSME की मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन धीरे से आप प्रोडक्शन भी देखने लगते हो, मार्केटिंग, सेल्स, सारे जो आपने सो-कॉल्ड HODs अपॉइंट कर रखे हैं मार्केटिंग सेल्स के, वो आपको पूछते सारे ऑर्डर लेना है क्या, ये माल लेते हैं बेचना है क्या. जब सब आप ही से पूछेंगे तो वेयर इज द सिस्टम इन प्लेस, राइट? सो यू आर इन्वॉल्व्ड. एंड एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हो, आपने जो बैंक से लोन लिया उसको इंटरेस्ट सर्व करने के लिए काम कर रहे होते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हो, आप वर्किंग कैपिटल साइकिल मैनेज करने के लिए काम कर रहे होते हो, आप अपनी कंपनी में ही दूसरों की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो. एक तरफ दूसरे स्टार्टअप है जो पीछे से निकल के आए और एक तरफ से आपको कॉम्पीट करते हुए आगे निकल गए, बिकॉज दे आर फ्री. एंड वाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर फ्रीडम इज द टेक्नोलॉजी. दे आर मेजरली डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी. उनको टेक्नोलॉजी को ग्रोथ नहीं देनी पड़ती है, ईयर बेसिस अपग्रेड करना पड़ता है. एंड द अपग्रेडेशन कॉस्ट इज क्वाइट लेस देन द ग्रोथ यू आर प्रोवाइडिंग टू योर एम्प्लॉयज एंड most employees are rather sharp. And you? Well, sir. Oh. And then absolutely, but then, so you, I'm a bit blind, but it's about...
that is a third. And I'm talking to Mr. Devaki, sir. Where do you see this interaction? Cybersecurity fitting on the Kaufman? Do you think because in your interaction with this, कितना SMEs में हो जाता है cybersecurity beyond just having an antivirus? Yeah, it's a very important and very nice question, sir. साइबर सिक्योरिटी हम मंडी तक यही मान के चल रहे थे, हमारा कंप्यूटर या बहुत ज़्यादा वो तो हमारा मोबाइल और साइबर सिक्योरिटी साइबर थ्रेट्स जो थे. लेकिन माइंड इट, योर डेटा इज मच इम्पॉर्टेंट रादर देन योर वर्क. अगर वो डेटा एक बार गया ना, और चूंकि ये सारी मशीन्स आपकी जो इंडस्ट्री बोर्ड में ये सारी मशीन्स है ना, ये इतना डेटा होगा आपका, इतनी हिस्ट्री होगी, और ये सारा अगर इन्वॉल्व गया तो आप समझ लीजिए कि पैरालिटिक अटैक जैसा है आपकी सिस्टम एक तरह से. इट विल बी डिफिकल्ट टू रन. तो साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा, जैसे मैं देखता हूँ कि कभी भी अगर इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर द system or industry or MSME, if it is going for the industry for, never ever have the one system only. Like a networking should be in the segments. So if one particular segment is compromised somewhere, तो आपके पास में डेटा होगा. डेटा बैकअप जरूर रखें, जैसे आप कंप्यूटर्स में रखना है आजकल, वैसे इंडस्ट्री में डेटा हमारे पास जरूर बैकअप होना चाहिए. Security audits are frequent. Security audits are want. हमको सिक्योरिटी अपने जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं कहाँ से, उनके लूपहोल्स हैं, ट्रोजन कहाँ से आ सकता है, कहाँ से फिशिंग अटैक होगा, इन सब के लिए हमको बहुत सचेत रहना होगा. और ये हम कोशिश करें कि सिक्योरिटी ऑडिट्स हो अक्सर कराएं. प्लस कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं और कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी एक साइबर सिक्योरिटी का साइन है, और वो लोग भी फ्री सॉफ्टवेयर और टूल्स भी अवेलेबल करवाते हैं इवन फॉर द कंप्यूटर, मोबाइल एंड ऑल. बट फॉर दिस यू हैव टू कीप द वेंडर्स, सिक्योरिटी वेंडर्स, और उसमें लगातार आपकी कोशिश करते रहें, आप पता करवाते रहे कि कहीं से कोई लूप होल तो नहीं बची है, और ज़रूरी है इसकी. क्योंकि अगर एक बार डेटा दिया तो सिस्टम फेल होने में, आजकल आपको एक पता तो आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ई मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं. अभी हम लोग करते थे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, person was doing it directly running the machine. But nowadays the scientists and the engineers and the practitioners, they are working on the e-manufacturing. आप बैठे चंडीगढ़ में हैं फिर और काम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, and you are having the entire control with the industry food. So that's why I was talking in the beginning of talked about the industry vitals. So e-manufacturing जब आ जाएगा, and whenever you are connecting to the IoT, because internet of things जहाँ पर भी होती है वहाँ security threat है, and that doesn't security threat, threat है. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इनको बहुत हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. In general, if you really had taken that one property, so you what she has an emergency beam, and if it so you have to rush. So thanks for joining us. We continue with the session. That's good. Thank you. Thank you, Brahma. Many of them were family businesses, and now probably a couple of decades having this generation their children entrepreneurs in the business. How's their sense of technology? And innovation technology. Do they understand? That certain things need to be changed. New innovation needs to be in that business, or there's a new entry certain mindset that whatever nothing has nothing. I will continue to be the leader. Who's there more? Yes, this is already like that. The practice that technology वाला कर रहे मैं कैसे भी थोड़ा सा ध्यान से चलता है. देखो कि इस बात में मुझे लोग कहेंगे और describe की solution available is step aside is a little bit of a good years to like that. But you say out there was the span like that you more technology still stuff I know. Don't worry about them. तो second generations आ रहे हैं वो. तो second generation जो कि technology बच्चे आज का नहीं और ये savvy है. Affecting boy पता बहुत है कि टेक्नोलॉजी है, लेकिन राइट सोल्यूशन अपने बिजनेस में लिए भी करना वो एक तरह की कला है. तो वन चीज़ जो है समझने की ज़रूरत होती है कि ये टेक्नोलॉजी तो ऑल अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आपके बिजनेस की क्या राइट है.
So that is what we have right selection is very, very. And definitely so setting the pressures where I see them so much away and but मैं इसको हमेशा कहूँगा कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले टेक्नोलॉजी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है बिकॉज मे बी बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी एक सोल्यूशन आपने ले लिया एंड तो पेड फॉर दैट बिकॉज यू बी पेइंग फॉर द टेक्नोलॉजी हो सकता है कि उसके जो है 20 रिवाइज है दो यूज कर पा रहे तो बाकी 18 जो है यूज नहीं कर पा रहे तो ये टू मेक श्योर दैट यू आर अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी उसके मैक्सिमम जो है यूसेज आप इसको करना That's funny. Excellent. She always asks question to use. Automation, when we talk about when the SMEs do talk about automation. To understand automation, exactly what it is and how it can actually that's the boss when it comes to marketing technology to SMEs understand that. And if so, what can be the right technologies which can end this thing? Nowadays, the difference between startup and MSMEs it's very thin line because both are youngsters. So they definitely understand technology. I would like to quote examples like because I am heading to another meeting in Merit, that is my NRA, National Restaurant Association of India. So they are also they are running a restaurant, but they are having a workshop there in Merit to discuss what new technologies are coming and how we can adopt. And I am also going to enroll there after this session. So yes, they understand technology. Most of them, like restaurant owners, for example, they are adopting Paid Puja as a software for their regular insights of inventory, of production, of sales. Or there are many solutions available as per your need, like small scale SMBs or restaurant or having Paid Puja as a solution, then they move to Dot Pay as a solution. Then bigger organizations or bigger restaurants, they are going for Zoho as a software. So there are many solutions available. It depends upon your need. So it's a need of the business which solution you are adopting. And the major news what you asked about is everybody knows that AI ML are disrupting the whole game. So you need to adopt because ultimate objective is to optimize your productivity and increase your profit. So with the help of these tools and algorithms, you very well know in advance what sort of requirement is your business or future prediction that saves your time and increase your capacity, because most of the time as a MSME factory owners, they don't know what is their optimum utilization of the capacity. So if a milk company is having 50,000 liter per day production capacity and they are not utilizing it or running in 30,000 SPD for a year, then they will be in a huge loss. They cannot serve the interest. So your catchment area has been predicted with the algorithm of AI and ML tools that how many milk collection centers you should have so that you can have enough milk and you get make a value-added product out of that milk, and what will be the sales required for matching your expenses. So these kind of smart solutions are available and you need to adopt that. You can have on your mobile. It's a simple dashboard and you can focus upon your sales, your marketing, your future predicted predictions. So these kind of solutions, if you adopt, they all are available and people are aware of these solutions. AI, ML and data analytics, which can predict your requirement, which can give you which can optimize your operations, daily operations, and increase your profitability. So the solution, the mantra at the end, what I would like to give is, because all these solutions are available for MSMEs, but there is a cost. If you want to reduce this cost or avoid this cost, you should marry with a startup. You should marry with a startup. Because those startups are creating a good technology, but they don't know how to implement it in the business, because you are having that bandwidth, you are having 20-25 years of experience running your MSME successfully by hit and trial method, everything you are doing. But now the scenario is changed. You need upgrade and you upgrade your business with the help of technology. And these young brains are coming up with new technology, but they need a fatherly figure to hand over them to, they just want to
do a pilot or proof of concept POC with your running business. आपकी चलती दुकान में वो अपना सॉफ्टवेयर लगा के टेस्ट करना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं है. And at that moment, if you pick a right startup, ना, you provide a seed capital or an angel investment. जैसे सर ने बताया कि आप उनको एक चैलेंज के तौर पे इन्वाइट कर सकते हो और वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके थ्रू दे देंगे. They don't need anything. They just need a validation of their idea. They need a simple capital to make a prototype running. जो कि आप किसी बड़े सॉल्यूशन को ऑर्डर करने जाएंगे ना तो आपको लाखों में पड़ेगा. ये कुछ लाख हज़ार रुपये में आपको सीड कैपिटल के तौर पे ये एक तो आपका आईपी भी आ सकता है. अगर उसको वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से सिक्योर करता है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके पास आ जाएगा. वो आईपी आपके बिजनेस का हो जाएगा. आप सोचेंगे उस आईपी की वजह से आपके बिजनेस की वैल्यू कितने फोल्ड्स बढ़ जाएगी. तो दीज आर द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड कि यू शुड अडॉप्ट एटलीस्ट वन MSME शुड अडॉप्ट वन स्टार्टअप. दिस शुड बी द टेक अवे फ्रॉम दिस. Then only your success will be long in starting. Yeah. I think. Thank you. So I think we have still some time for audience Q&A. वही क्वेश्चन है अगर आप इंश्योरेंस करते हैं what is ना हेल्प कर सकते हैं. ये इंक्यूबेशन सेंटर में मतलब स्टार्टअप के लिए क्या रोल है इंक्यूबेशन? देखिए हमारा रोल वही है जो कि रोल स्कूल और कॉलेज का होता है. आप स्कूल और कॉलेज में क्यों जाते हैं जब सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे एक क्लिक पे अवेलेबल है. हम स्कूल या कॉलेज इसलिए जाते हैं बिकॉज वी आर गेटिंग अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग. हम लोग एक स्टेज से दूसरी स्टेज में स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज. ठीक है, उसी तरीके से जब आप इंक्यूबेशन सेंटर में आते हो और आप साइलोज में काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपके ऊपर कोई मॉनिटर नहीं करता है, ना आपके माइलस्टोन सेट करता है, ना उसके अचीवमेंट पे आपको अपग्रेड करता है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एंड अदर थिंग्स. तो जब आप इंक्यूबेशन सेंटर में आते हैं तो आपको एक तो मेंटरशिप मिलती है जिसको जो आपको ऑब्जर्व करता है कि आप राइट वे में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. बिकॉज मेंटर्स आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, दोज हू नो व्हाट नॉट टू डू. दे विल सजेस्ट यू व्हाट नॉट टू डू विच सेव्स योर लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. ठीक है, एक स्टार्टअप की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं, कुछ नहीं है. टाइम इज द इम्पॉर्टेंट एसेट और MSME स्टार्टअप नाउअडेज. बिकॉज अगर आपका वो टाइम सेव कर देता है बेटर तो आप उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ते हुए कुछ और इनोवेटिव आइडिया पे काम करेंगे. और आप जब इंक्यूबेशन में आते हैं तो आपको आपका आइडिया जो है उसको कन्वर्ट करते हैं बिजनेस मॉडल में. बिकॉज यू आर हैविंग एन इनोवेटिव आइडिया बट यू डोंट नो हाउ टू रन अ बिजनेस. मोस्ट ऑफ द टेक्नोक्रेट्स कम टू अस, दे हैव एन ब्रिलियंट आइडिया बट दे डोंट नो हाउ टू सेल इट इन द मार्केट. व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल टू बी अडॉप्टेड. तो ये सारी चीज़ें हम उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्यूबेशन समझाते हैं कि उनके आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें और उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में एंटरप्रेन्योर कैसे. क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड. एंड वेयर दे आर मेड इन द फैक्ट्री कॉल्ड इंक्यूबेशन सेंटर with the proper guidance of mentors. They have access to technology, they have access to labs, they have access to mentors, they have access to first paying customers. जब वो आइडिया वैलिडेट हो जाता है तो हम फर्स्ट पेइंग कस्टमर से भी कनेक्ट कराते हैं. एंड देन वी कैन लॉन्च देयर प्रोडक्ट, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी एंड देन वी कैन कनेक्ट विद इन्वेस्टर्स. तो उसकी पूरी 1 साल 2 साल में जो लाइफ साइकिल है वो स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है आगे. अदरवाइज एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर वर्किंग इन साइलोज लाइक MSME एंड अदर स्टार्टअप्स जो इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं आते, उनकी ग्रोथ भी होती है बट उस पेस पे नहीं होती है, उस स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती है. हिट एंड ट्रायल से होती है, खुद की लर्निंग से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. सर कौन से मेरी आपसे भी मतलब ये I'm sure बहुत सारी MSMEs को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उन्हें पता कैसे चलेगा? I mean how can you reach out to them? What things? So there is a portal called MP MSME पे आपको पॉलिसीज बेनिफिट सारे मिल जाएंगे, चाहे वो स्टार्टअप के लिए हो चाहे MSME के लिए हो. इसके अलावा अगर नेशनल पोर्टल MSME क्या है उस पर आपको सारी पॉलिसीज मिल जाएगी. फिर स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म है जिसको हम रेगुलरली वॉच करें. उस पर बहुत सारे चैलेंजेस ब्रांड्स है जिसमें कि आप फिट बैठ सकते हैं. मोस्टली बैंक्स की बहुत सारी, जैसे सिटी इज़ द नोडल बैंक जो कि इस टाइप की सारी जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास फंड्स हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल पे. तो आप MSME क्लिक करना है बस, इतना एफर्ट तो खुद ही करना पड़ेगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो मिली रहेगी. STP की दूसरा ऐसे रीच हो जस्ट पहले वन पॉइंट कि जैसे आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो स्वस्थ होने के लिए. तो हम अगर इस टेक्नोलॉजी के स्टार्स क्लाइंट में बोलते हैं बिजनेस क्लाइंट में कि डॉक्टर को अपने मेंटर्स बोलते,
तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपका बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है या आपको हिसाब से लगता है कि आपको स्केल अप जितना हो पा रहा उस हिसाब से नहीं हो पा रहा, तो यू कैन, ऐसा नहीं स्टार्टअप्स की मेंटर पे, इवन एसएमएस के लिए मेंटर्स हो सकते। तो मेंटर्स क्या बहुत नहीं करते, आपको वो राइटली गाइड करें कि व्हाट आर द स्टेप यू हैव टू टेक, वेयर हैव टू प्लान, आप अपना बिजनेस कैसे स्केल अप करोगे, कैसे ग्रो करेंगे, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे आपको बनाना है, आपको सेल्स स्ट्रैटेजीज कैसे बनाना है, आपको प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करना है, आपको न्यू कस्टमर्स को कैसे टारगेट करने हैं, कैसे आपको रीच कर पा रहे हैं, आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज क्या होगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप इंक्यूबेशन सेंटर पर जाके गाइडेंस ले सकते। तो उनके वहाँ पर जो मेंटर्स अवेलेबल, तो मेंटर्स से विस्तार जैसे मैंने कहा कि कोई खास स्वस्थ इंसान है डॉक्टर के पास जाता है, अगर हमें लगता है कि हमें थोड़ा और अच्छा हो रहा है तो हम उसके लिए भी मेंटरिंग ले सकते। तो मेंटरिंग करने हुए तो फॉर एनी यूज, और मुझे लगता है कि एक मेंटरिंग सेशन जो है अपने लेवल पे जो है आप लोग को किसी न किसी के साथ जरूर लेना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि आपको जो ग्रोथ नहीं मिल रही है तो मिलनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, तो वो चीज़ मेंटरिंग आप इंक्यूबेशन सेक्टर में जाके वो ले सकते हैं। तो दैट इज रियली प्ले अ वेरी मेन रोल। और दूसरा रिसोर्स के लिए आप यू कैन ऑलवेज कोलैबोरेट विद जी कोऑर्डिनेटिंग साइड में जाए, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से रिसोर्स मिल सकते हैं, तो वो भी एक आप जरूर देख सकते। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अभी डिफरेंशिएट किया कि एमएसएमई और स्टार्टअप्स दोनों अलग अलग और दोनों के बिजनेस अलग खास काम करने का तरीका अलग अलग है। मेरा एक क्वेश्चन है ना, क्योंकि पास्ट 8 साल से मैं सॉफ्टवेयर कंपनी रन रहा था और वो जब स्टार्ट किया था मैंने तो बैंक्स के पास गया, जब मैं एमएसएमईज के थ्रू अगर मैं जाता था पढ़ने के लिए तो वो मना करते थे भैया ये एमएसएमई में नहीं आता। और जब स्टार्टअप्स में जाता था तो वहाँ पे होता था कि पहले आप प्रोडक्ट कैरिंग कर लो, उसके बाद आना तब हम आपको रिकॉग्निशन देंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज किस में आती हैं, आप थोड़ा सा मुझे क्लेरिफाई कर पाएंगे? देखिए, अगर आप इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए जो या डॉट पे का, ठीक है, तो आप डिफरेंटली स्टार्टअप के डेफिनेशन में आ जाएंगे और ये आपको डिसाइड नहीं करना है, यू जस्ट गो एंड अप्लाई टू DPIIT फॉर स्टार्टअप रिकग्निशन। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं मिला तो आप MSME हो। दोनों में से एक तो होंगे ही ना। एमएसएमई के लिए कई बैंक में तो कैसे अरे आपने पहले सर्टिफिकेशन लिया कि नहीं लिया, उद्योग आधा रहे ना आपके पास, तो वो आपका MSME सर्टिफिकेशन हो गया और DPIIT सर्टिफिकेट आपका स्टार्टअप सर्टिफिकेशन हो। मेरा तो ऐसे लोग जाता है जिनके पास दोनों हैं, तो फिर क्या आप होते जैसे आप तो सर्टिफिकेट सबमिट करो, डिक्लेयर लगाओ और बैंक के पास चले जाओ। मैं वो लेटर दिखा सकता हूँ 5 साल पुराना जो अपलोड हो चुका है। 5 साल से दुनिया बहुत बदल गई, मतलब आप समझिए 5 साल पहले ना कोविड था ना कुछ था ना पोलिटिकल फ्री फंडिंग थी। आज पोलिटिकल फ्री बहुत सारी स्कीम्स हैं उस अप टू 1 CR तक के, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को भी पोलिटिकल फ्री फंडिंग मिलती है, उसको भी एक एसेट माना जाता है। आपके SaaS प्लेटफॉर्म जो है ना, पहले बैंक्स को भी समझ में आता थे, अब बैंक्स आर मोर ग्रेजुएटेड बिकॉज हमने इतना हिट किया उसको कि उनको समझ में आने लगे कि ये भी एक एसेट है। अगर एक स्टार्टअप आया जिसके 10,000 डाउनलोड्स है एप्लीकेशन पे पर ₹1 का धंधा नहीं किया है, उसकी भी वैल्यू है। वो 10,000 जो सब्सक्राइबर्स है उसकी वैल्यू है। ये समझाने में इंटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू है ये समझाने में हमको टाइम लगा बैंक को, लेकिन नाउ दे आर मोर अफेक्ट ऑफ ऑल दिस लॉस, राइट? सो यू सजेस्ट मुझे फिर से एक बार बैक, हर साल अभी तक तो पर्सनल लोन से ही काम चल रहा है, गलत काम में तो फिर ठीक है। आपके पॉकेट और आपकी हम की पॉकेट अलग है, आप एक ही पॉकेट से कर रहे हो। Yes, sir, from the back. Oh, this is one is good. इंडस्ट्री लगता है तो मेरा जैसे आपने आज कहा कि वी ऑल्सो नीड वेटर इन सम स्टेज हो गए, मतलब मैं कुछ ग्रोथ करना है या टेक्नोलॉजी में कुछ इशू में जो हमारे अंशमान, so where the incubation center of startups can mentor us or they can also help us in guiding these. So how can we build up bridge? Innovation center के बाद एक और आप नेटवर्क होता है मेंटर्स और बोनस फैक्टर्स कि मैं आप उसमें जो है आप अपनी पे के हिसाब से चूज कर सकते। तो जब भी आप इनोवेशन सेंटर्स पर जाए सकते हैं, थोड़ा बड़ा अच्छा पैसा नेटवर्क होता है। एक दो मेंटर्स ही होते हैं, ऐसे मैं अपनी बात करूँ इससे कि हमारे पास 200 नेटवर्क के मेंटर्स का अलग अलग फील्ड्स के वेटरन्स ने जो मीट में
जो वो 40 साल का एक्सपीरियंस था 20 साल तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, आप उसको चूज कर सकते हैं। और वहाँ पे जो बैठे हैं सीईओ है वो हम भी मेंटर्स, आप या तो उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं, आप उसमें से चूज कर सकते हैं पर्टिकुलर मेंटर ही से ही आपको अपनी गाइडेंस चाहिए या चाहिए। तो मैंने बताया कि वो एक जैसे मैंने बताया कि आप किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपके लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि आपने मान लीजिए पैसे भी खर्च किए और आपको मिला भी नहीं वो चीज़, तो आप कहीं ना कहीं जो है युवा में आप वही जो कि हम तो वो डिसीजन जो है आपका डिसीजन सही नहीं, तो वो सही डायरेक्शन में आपको इंटरेस्ट दिखाए। और इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स, अगर अपन प्रोडक्ट इंडस्ट्री को हटा दें और सर्विस SaaS को हटा दें, देन देयर इज ऑल्सो सेगमेंट जिसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज तो कर सकते हो, बट देयर इज ऑल्सो प्रिडोमिनेंट नीड ऑफ एन ह्यूमन लेबर, राइट? से फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन रिक्रूटमेंट इंडस्ट्रीज, तो हमने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी यूज़ करी, हमारे पोर्टल्स एंड एक्सेस रेफरेंस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्किल इन मैन पावर, बट एट द एंड बिगेयर ह्यूमन टच के आवर बिजनेस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कल्चरल फिट देखना पड़ता है हर एम्प्लॉय का हर कंपनी के साथ। सो हाउ डू यू थिंक इन्वेस्टर्स के अंदर इस चीज़ को लेकर कैसे एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि देयर इज ऑल्सो फंड नीडेड फॉर सच टाइप ऑफ बिजनेसेस which aren't a SaaS-based software, aren't a product-based, but a service which is 50% technological based and 50% human touch is required. So, इसकी funding के लिए इतनी awareness नहीं है, and we also face challenges, right? Okay. I would like to answer your question, please. Like, ठीक है? And they don't invest in technology, rather they invest in solution. See? उनको मतलब नहीं कि आप ह्यूमन टच से काम कर रहे हो या इससे काम कर रहे हो। वो एक पैसा देंगे यार, 1 का 2 कप बना दोगे, 2 का 5 कप कर दोगे, 5 का 10 कप कर दोगे, ठीक है? यू हैव सम कन्विक्शन इन योर बिजनेस मॉडल, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि उनके पैसे रिटर्न कर दो। आप जब इन्वेस्टर की चेयर में बैठोगे, जब मेरी चेयर में बैठोगे, तो आपको ये मतलब ही नहीं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हो, क्या वो सॉल्यूशन मास की प्रॉब्लम को कैटर कर रहा है, बराबर, स्केलेबल है, बराबर, ठीक है, रिटर्न ROI अच्छा है, बढ़िया। नो मैटर कि उसमें ह्यूमन टच इन्वॉल्व है, कि फिजिकल टच है, कि इंटेंजिबल टच है, कि टचनेस है, ठीक है? तो ये आपका कंसेप्ट मिसकंसेप्शन है। इन्वेस्टर्स आर मोर वाइजर, उनको पैसा डालना है, पैसा निकालना है, उसको पैसे को ग्रो करना है, ठीक है? तो वो ना ह्यूमन पे इन्वेस्ट करता है ना टेक्नोलॉजी में, वो बंदे पे इन्वेस्ट करता है कि बंदा मेरा पैसा कितना ना कर देंगे। Thank you. So that's a good that excellent I have because other you have the reason about. Solution. The solution then. The question more. Thank you. We take more questions offline. Our next speaker is here. So we request all of you to stay seated because we have very engaging discussion. That's what was submitted. Thanks, thank you. What is the I got this is together to what a DJ tour. The aim of software technology banks of India. We are available. We also provide office space. If you have other services, you can always reach to us. There's import any from us like that. I do so. First to all our panelists, that was indeed a very intriguing session and a very elaborate session. Thank you again.